श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अथ द्वादशस्तोत्रे तृतीयोऽध्यायः। कुरु भुङ्क्ष्व च कर्म निजं नियतं हरिपादविनम्रधिया सततम्। हरिरेव परो हरिरेव गुरुर्हरिरेव जगत्पितृमातृगतिः। न ततोऽस्य परं जगदीष्टतमं परमात्मरतः पुरुषोत्तमतः। तदलं बहुलोकविचिन्तनया प्रवणं कुरु मानसमीशपदे। यततोऽपि हरे पदसंस्मरणे सकलं ह्यगमाशुलयं व्रजति। स्मरतस्तु विमुक्तिपदं परमं स्फुटमुष्यति तत्किमुपाक्रियते। शृणुतामलसत्यवचः परमं शपथेरितमुच्छ्रितबाहुयुगम्। न हरे परमो न हरे सदृशः परमः स तु सर्वचिदात्मगणात्। यदि नाम परो न भवेत् स हरे कथमस्य वशे जगते ददभूत्। यदि नाम न तस्य वशे सकलं कथमेव तु नित्यसुखं न भवेत्। न च कर्म विमामलकालगुणप्रभृतिशमचित्तनु तद्धियतः। चिदचित्तनु सर्वमसौ तु हरिर्यमयेदिति वैदिकमस्ति वचः। व्यवहारभिदापि गुरोर्जगतां न तु चित्तगता स हि चोद्यपरम्। बहवः पुरुषा पुरुषप्रवरो हरिरित्यवदत् स्वयमेव हरिः। चतुरानन पूर्वविमुक्तगणा हरिमेत्य तु पूर्ववदेव सदा। नियतोच्च विनीचतयैव निजां स्थितिमापुरिति स्म परं वचनम्। आनन्दतीर्थसन्नाम्ना पूर्णप्रज्ञाभिधायुजा कृतं हर्यष्टकं भक्त्या पठत प्रीयते हरिः इति द्वादशस्तोत्रे तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।